Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this beautiful flower. ये देखिए फ्लावर बनाएंगे आज हम. आप इसे जितना बड़ा चाहे जितना छोटा चाहे उतना बना सकते हैं. You can increase or decrease the size according to your wish, however you like it. You can make that. This is not completed, but this is the flower with two rounds, and this is with the 5 rounds, and this is the whole flower. So once in the tutorial I'm going to teach you this, you'll be able to make this. So I hope you like it. You can make it into a bag, you can just make it as a display. It totally depends on you. I hope you like it. So let's get started. So we'll start by making a magic circle first. सबसे पहले हम एक magic circle बनाएंगे. So take the yarn, wrap it around your fingers, hold it with your thumb, put the needle under the first loop and pull the yarn through the loop and slide it off your fingers and chain 1 to secure. So magic circle बनाने के बाद हमें अब यहाँ पे 12 double crochet stitches बनाने हैं. We have to make 12 double crochet stitches into the magic circle. So first we'll chain 1 and it doesn't count as a stitch. So just start making double crochet stitches. तो ऐसे ही हम 12 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So after making 12 double crochet stitches, we'll pull the yarn tail and close the magic circle. हम इसे pull करके magic circle को close कर देंगे and we'll slip stitch onto the first double crochet stitch that we made. तो जो पहला double crochet stitch हमने बनाया था उससे हम slip stitch करके इसे join कर देंगे. So here our round 1 is done. Round 1 हमारा हो गया है. Now let's begin with our round 2 and from now on we have to work only in the back loops. So अब से हमें सिर्फ back loops में work करना है. ये जो है ये front loop है और ये पीछे वाली side जो है ये back loop है. तो हमें अब सिर्फ back loop में work करना है. So we have to work only in the back loops now. So first we'll chain 2, 1 and 2, and in the first stitch here where we did the slip stitch we'll work 2 double crochet stitches. तो ये पहला जो स्टिच है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है इसके बैक लूप में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2. अब नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. सो 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच एंड रिमेंबर टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट, 2 नेक्स्ट में बनाएंगे. 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट, and this is the pattern for round number 2 that we have to do 2 double crochet stitches in each of the following stitches and make sure to do only in the back loops. तो हमें 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हर एक स्टिच में करते जाना है जब तक हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता. और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है आपने. So I'll complete the round and then meet you back once I reach the starting point. So once you complete the round, you have to slip stitch onto the first double crochet stitch that you made. तो जो पहला double crochet stitch बनाया है उस पे slip stitch करके इसे join कर देंगे. So this is your round number 2. Now let's start with our round number 3. Round 3 start करेंगे chain 2 and it doesn't count as a stitch. And in the first stitch here where we did the slip stitch we'll work 2 double crochet stitches. तो पहली stitch में हम 2 double crochet stitches करेंगे and 1 double crochet stitch into the next stitch. तो next वाली stitch में एक double crochet stitch करेंगे. Then again 2 double crochet stitches into the next वाली में 2 double crochet stitches करेंगे and 1 double crochet stitch into the next.
एंड रिमेंबर दैट वी आर वर्किंग ओनली इन द बैक लूप्स. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करना है. तो यही पैटर्न रहेगा इस राउंड के लिए. सो दिस इज द पैटर्न फॉर दिस राउंड. 2 डबल क्रोशा स्टिचेस and 1 double crochet stitch into the next. Then again 2 in the next, 1 in the next. तो इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है 2 1 2 1 के रेशो में जब तक आपका ये राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता. So I'll complete the round and then meet you back here. So I've completed the round and now I'll slip stitch onto the first double crochet stitch that I made. तो ये जो पहला डबल क्रोशा स्टिच बनाया था मैं उससे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को ज्वाइन कर दूंगी. Now we'll start with our round number 4. Fourth round को स्टार्ट करते हैं chain 2. And in the first stitch where we did the slip stitch, we'll work 2 double crochet stitches in the back loop. तो back loop में 2 double crochet stitches बनाएंगे पहली stitch के. 1 double crochet stitch into the next stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे and 1 double crochet stitch into the next. तो next में भी एक double crochet stitch बनाएंगे. And this is the pattern for this round. इस round के लिए यही pattern है 2 1 1. तो पहले 2 double crochet stitches, फिर next वाले में 1, फिर next वाले में 1, फिर next में 2, फिर 1 1 2 1 1. This is the pattern for this round. So 2 double crochet stitches into the next stitch, 1 in the next, 1 in the next, then again 2 in the next, 1 in the next, 1 in the next. So I'll repeat doing this and until I reach the end and then meet you back here. So make sure that you're following the pattern for this round, which is 2 1 1. So 2 double crochet stitches in a stitch, then 1 in the next and 1 in the next. So इसी पैटर्न को रिपीट करके ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे. So I've completed this round as well and I'll be doing slip stitch onto the first double crochet stitch that I made. तो जो पहला double crochet stitch बनाया था उसमें slip stitch करके इसे join कर देंगे. So इसके साथ आपका round number 4 भी होता है complete and you can make this as big as you want. It totally depends on you. तो ये जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हैं. जितना बड़ा आप सर्कल बनाएंगे उसके बाद उतना बड़ा आपका फ्लावर बनेगा. So now let's begin with the next round. Next round start करते हैं chain 2 एंड फर्स्ट वाली स्टिच में हमेशा 2 डबल क्रोशा स्टिचेस आपने करने हैं एंड एवरी राउंड के साथ जो सिंगल क्रोशा स्टिचेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. क्योंकि देखिए पहले राउंड में हमने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशा स्टिच किए थे, फिर नेक्स्ट वाले राउंड में एक स्टिच छोड़ के 2 डबल क्रोशा स्टिच किए थे, फिर थर्ड वाले राउंड में 2 स्टिच छोड़ के इंक्रीज़ किया था, फोर्थ में तीन स्टिचेस इसमें एक स्टिच छोड़ के इंक्रीज़ हुआ है, इसमें 2 स्टिच पे सेकेंड स्टिच पे इंक्रीज़ हुआ है, इस पे थर्ड स्टिच पे इंक्रीज़ हुआ है. सो नाउ वी हैव टू इंक्रीज़ ऑन द फोर्थ स्टिच. सो फर्स्ट वी मे वर्क 2 डबल क्रोशा स्टिचेस ऑन टू द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशा स्टिचेस करेंगे एंड देन वी हैव टू इंक्रीज़ ऑन एवरी फोर्थ स्टिच. तो हर फोर्थ स्टिच पे हमने इंक्रीज़ करना है. सो 1 डबल क्रोशा स्टिच, 1 in the next, 1 in the next and now we have to do an increase. अब हमें increase करना है तो हम 2 double crochet stitches बनाएंगे. So we'll work 2 double crochet stitches here. Then again 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next and on the fourth stitch we'll do an increase. So we'll make 2 double crochet stitches here. Similarly 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next and 2 into the next. So we are doing an increase on every fourth stitch. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम हर फोर्थ स्टिच पे इंक्रीज कर रहे हैं. जो पहला स्टिच है उसके 2 डबल क्रोशे स्टिच तो हमने फर्स्ट वाले में तो 2 डबल क्रोशे स्टिच करना ही करना है. उसके बाद से हर फोर्थ स्टिच पे हम इंक्रीज करते जाएंगे. सो ऑन द फर्स्ट स्टिच वी हैव
an increase, and after that on every fourth stitch we have an increase in this round. So this is the pattern for this round. One double crochet stitch into the next, then one more double crochet stitch into the next, one double crochet stitch into the next, and now onto the fourth stitch we have to do two double crochet stitch, which is an increase. So this is the pattern we have to repeat for this round. So complete it and then I'll meet you back here. तो मैंने ये वाला राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीटेड द राउंड एंड नाउ आई स्लिप स्टिच ऑन टू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच दैट आई मेड. तो जो पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाया था उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी. एंड देन now like we increased on to the fourth stitch in this round, now we have to increase on every fifth stitch. तो अब हमें नेक्स्ट राउंड के लिए हर फिफ्थ स्टिच पे इंक्रीज करना है. तो हर फिफ्थ स्टिच पे हमने दो डबल क्रोशा स्टिचेस बनाने हैं. चेन टू एट द बिगिनिंग which doesn't count as a stitch, it's just for the height. So on the first stitch every time we have to make an increase, so we'll work two double crochet stitches. तो पहली स्टिच में हमेशा दो डबल crochet stitches बनेंगे. And remember to work only in the back loops because we need these loops to make the petals. तो हमेशा बैक लूप में ही वर्क करना है हमने, क्योंकि ये वाले जो फ्रंट लूप्स हैं इसमें हम पेटल्स बनाएंगे. So we have made two at the beginning. Now on the fifth stitch we have to make an increase. So one double crochet stitch into the next, one in the next, one in the next, one in the next, and on the fifth stitch we'll work two double crochet stitches. तो हम हर फिफ्थ स्टिच पे आपने दो डबल क्रोशा स्टिचेस बनानी है. तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. वन डबल क्रोशा स्टिच, वन इन द नेक्स्ट, वन इन द नेक्स्ट, वन इन द नेक्स्ट, and two in the next, which is the fifth stitch. So on every fifth stitch we have to do an increase in this round. इस राउंड में हमने हर फिफ्थ स्टिच पे दो डबल क्रोशा स्टिचेस बनाने हैं. So we'll work two double crochet stitches on every fifth stitch. So one double crochet stitch, one in the next, which is the second stitch, one double crochet stitch in the next, which is the third stitch, one in the next, which is the fourth stitch, and now we'll work two double crochet stitches into the next, which is the fifth stitch. And this is the pattern for this round. So you have to just keep repeating that until you reach the end of the round. So now I'll do a slip stitch onto the first double crochet stitch that I made to join the round. तो मैं पहले जो मैंने डबल क्रोशा स्टिच बनाया था उस पर मैं इसे ज्वाइन करके ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी. So like in the previous round we did an increase on every fifth stitch, now we have to do an increase on every sixth stitch. तो अब हम हर sixth stitch पे increase करेंगे. And this is the way you have to if you want it to be more big, you have to repeat the pattern. Like you have to do an increase on every sixth stitch, then in the next round you have to do an increase on every seventh stitch, then on every eighth stitch, then on every ninth stitch. It depends on how big you want it to be. तो जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा आप सर्कल बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू एन इंक्रीज अकॉर्डिंगली. तो आपको इसी हिसाब से करना है. अब प्रीवियस रो में हमने हर फिफ्थ स्टिच पे इंक्रीज़ किया था. अब इस राउंड में सिक्स्थ स्टिच पे इंक्रीज़ करेंगे, हर सिक्स्थ स्टिच पे. फिर नेक्स्ट वाले राउंड में हर सेवन्थ स्टिच पे इंक्रीज़ करेंगे, फिर हर एट्थ स्टिच पे इंक्रीज़ करेंगे. जितना बड़ा आप चाहते हैं अपना सर्कल उतना बड़ा आप अपना सर्कल बना लीजिए और उसके बाद हम अपने पेटल्स पे आएंगे. सो मैंने जो एक बनाया है, ये देखिए मैंने इतना बड़ा बनाया है. सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक once it is made. So this is of this is of 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is of 9 rounds. तो इसमें मैंने 9 rounds बनाए हैं. So after making 9 rounds I started making the petals. So it depends on you how big you want it to be, the big your circle should be. तो जितना बड़ा आपका सर्कल होगा उतना ही बड़ा ये बनेगा. सो आई फील दैट 9 राउंड्स परफेक्ट रहते हैं, तो मैंने इतना बनाया है. बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हैं. सो वंस यू कंप्लीट द सर्कल देन यू हैव टू मेक द पेटल्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू fasten off so that I can show you how to make the petals, because I'm not going to make it more big. I'm going to stop here. तो मैं इतना ही इसको बनाऊंगी. तो आपको अगर बड़ा करना है तो आप
इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने राउंड्स। तो यहाँ पे हमको एक बार आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे डिज़ायर्ड साइज़ पे पहुँच जाते हो तो आपको फास्टन ऑफ करके यार्न को कट कर देना है। सो वंस यू रीच योर डिज़ायर्ड साइज़ यू हैव टू फास्टन ऑफ एंड कट द यार्न. So we'll just cut the yarn and fasten off, because now we have to start from the center on the front loops of the stitches, because we have to make the petals. तो अब हम petals बनाना start करते हैं. So let's start making the petals now. So let's start making the petals now. अब petals बनाना शुरू करते हैं. So we'll take the yarn and make a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And then you can see this first round of the front post stitch, the front loop stitches. We have to work in these. तो ये जो दिख रही है ना आपको ये lines, ये front loop है, इनमें अब हम work करेंगे क्योंकि back loop में तो हमने work कर लिया. So we can insert the needle in any of these, doesn't matter, किसी में भी आप insert कर सकते हो अपनी needle इनमें से, और वहाँ पे आपने अपना ये yarn attach करनी है. So we'll attach the yarn here. Chain 2, 1, 2, and now I'll be working over the yarn tail so that it gets secured, and where we attached our yarn we'll work a double crochet stitch into the same stitch. उसी same stitch में हम एक double crochet stitch बनाएंगे, and this chain 2 also counts as our first double crochet stitch. So we have 2 double crochet stitches here. ये देखिए जो chain 2 है ये भी हमारा double crochet stitch की तरह ही count करेगा. Now in the next stitch we'll work 2 double crochet stitches. Next stitch में 2 double crochet stitches work करेंगे. 1, 2 and 2 double crochet stitches into the next stitch. So the next stitch है उसमें भी हम 2 double crochet stitches work करेंगे, and I'm working over the yarn tail so that it gets secure. तो मैं yarn tail के ऊपर ही work कर रही हूँ ताकि ये secure हो जाए. Now chain 3, 1, 2, 3 and turn your work. अपना work turn कर लीजिए chain 3 करने के बाद. Now in the very first stitch we'll work a double crochet stitch. First stitch पे हम एक double crochet stitch बनाएंगे. So this chain 3 is our first double crochet stitch, and we made one more, so we have 2 in the first stitch. We'll work 2 double crochet stitches into the next stitch. तो हमारे पास पहले 2 हो गए double crochet stitches पहले stitch में. अब हम दूसरे में भी 2 double crochet stitches बना रहे हैं. 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में भी 2 double crochet stitches बनाएंगे. 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में भी 2 double crochet stitches बनाएंगे. 2 in the next वाले में भी 2 बनाएंगे. 2 in the next. 1 and 2. The last 2 are on the chain 2 that we made at the beginning. तो जो last 2 double crochet stitches हमने बनाए हैं वो chain 2 के ऊपर बनाए हैं. So total we must have 12 double crochet stitches including the chain 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Because we had 6 double crochet stitches and we made 2 on top of them. So we have now a total of 12 double crochet stitches. Now we'll skip 1, 2, 3, 4, 5. We'll skip 5 stitches and we'll go into the 7th stitch and we'll do a slip stitch. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हम skip करके 7th वाली में slip stitch कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is the 7th one. So we'll go into the 7th one and we'll do a slip stitch. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जिस राउंड में हम वर्क कर रहे हैं उसी राउंड में हमने स्लिप स्टिच करनी है. अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो हमारा पेटल सही नहीं बनेंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग इन द सेम राउंड, because we have to fasten off after working in each round. We have to fasten off, and then after fastening off we have to attach to the next round, and then we have to start the next round. So make sure that you're working in the same round and you're not clubbing the two. So now we have to work reverse single crochet stitches. So first we'll chain 1. सबसे पहले chain 1 करेंगे. We'll go into the stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Then again go into the stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Again go into the stitch,
yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So we are doing single crochet stitches but reverse single crochet stitches because we did not turn our work, we just started working after the slip stitch. So we are just doing reverse single crochet stitches. तो हम बेसिकली सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर रहे हैं रिवर्स मैनर में, क्योंकि हम यूजुअली राइट टू लेफ्ट जाते हैं, इस बार हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं. देखिए, सो जस्ट गो इन, पुल अप अ लूप, yarn over, pull through 2. Go in, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Now go into the chain 3 that you made, the top chain, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Now again from here we'll skip 1 2 3 4 and in the fifth one we will make a slip stitch. तो फिफ्थ वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे. 1 2 3 4 and 5. So it comes here. So we'll slip stitch here, and this is, you can see the center portion of the flower is done. Now we'll start working the second petal of this round. Second petal बनाएंगे, chain 2, and in the same stitch we'll work one more double crochet stitch, 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 2 double crochet stitches करेंगे. And I find it easy when I fold it and then I work into the stitches. I find it very easy, so even you can do that. It will be really easy to work on them. Then in the next, again we'll work 2 double crochet stitches, 1 and 2. Sorry. Oh. Now chain 3, 1 2 3, turn your work. Now work turn कीजिए, and 1 double crochet stitch into the first stitch. So the chain 3 is the first double crochet stitch and we made one more, so we have 2 in the first stitch. Now we'll work 2 double crochet stitches into the next, into the next stitch, 1 and 2. Then 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में भी 2 double crochet stitches work करेंगे. Then 2 into the next, 2 into the next. तो हमने हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशा स्टिचेस किए हैं, एंड 2 ऑन टॉप ऑफ द चेन 2. तो ये जो चेन 2 हमने बनाया था स्टार्टिंग में, उस पे हम 2 डबल क्रोशा स्टिचेस करेंगे. देन अगेन वील स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर ऑन द सेम सर्कल, ऑन द सेम राउंड, 1 2 3 4, and now this time we will slip stitch onto the stitch from where this petal is starting. So we'll go in and we'll make a slip stitch. Then chain 1 and reverse single crochet stitches all around. तो reverse single crochet stitches करेंगे. Go into the stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Go into the stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2. Go into the stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So इस तरीके से रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. ये रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिच करने से जो इफेक्ट आता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है. So it looks really beautiful when you work these reverse single crochet stitches. You can even avoid doing this if you don't want it, but when you work these on top of the petals, it really gives a very nice look. I like it personally a lot. You know, it's my favorite stitch because it gives a really a nice, you know, perspective to whatever you're making. See, it looks so good. I don't know whether it's the camera is catching it or not, but it's really looking very pretty. Now we will make a slip stitch onto the portion here where the petal is starting. See, you can see this stitch over here where the last stitch is there. We'll just go in and we'll slip stitch here. तो ये जो लास्ट यहाँ पे स्टिच है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे. सी, ये देखिए बीच का पार्ट रेडी हो गया हमारा. नाउ chain 1 and fasten off. So we have to fasten off after every round because we have to attach the yarn in the certain place. So what I like to do is I like to just pull
the yarn tail at the back of the work, and then just tie the knot so that it's secure and doesn't open up, because anyhow we can just add a lining to it, or we can add another circular portion to cover this, or you can even you can weave in the yarn ends at the end if you like, but I just like to make a couple of knots and then I'll cut off the excess at the end. So our first round is ready. You can see the center portion is ready of the flower. Now we have to work on to the second round. Here you can see this portion. I hope it's visible in the camera. So this will be the second row, this will be the third row, fourth, fifth, and you can make it as big as you want. It's totally up to you. आप कितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हैं. ये देखिए. So अब हम second वाला row start करेंगे. So now second row should be started from where we ended our last petal. So round का जो भी last petal हम जहाँ end करेंगे, बिल्कुल उसी के सीध में हम अपना yarn attach करेंगे. So we'll make a slip knot and we'll attach the yarn here, because here we ended our petal. So we'll start the next round here. So we'll attach the yarn first, chain 2, 1, 2, work in the same stitch where we attached the yarn, उसी same stitch में work करेंगे. We'll work 2 more double crochet stitches in this round, 1 and 2. So we have a total of 3 this time, and this will be the pattern for the whole flower. Now for all the petals, this is the pattern now what I'm making. So make sure you see it properly. Now in the next stitch again we'll work 3 double crochet stitches, because this chain 3 is our first double crochet stitches we made stitch, and we made 2 more stitches, so we have 3 in total. Now in the next we have to make 3 more double crochet stitches, and I'm working over the yarn tail. तो मैं yarn tail के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ. 1, 2, 3 and 3 more double crochet stitches into the next stitch. तो next stitch में भी हम 3 और double crochet stitches करेंगे. 1, 2 and 3. So we have a total of 9 double crochet stitches this time, and we'll have 9 double crochet stitches in all the petals for the first round. So जब petal का पहला round बनाएंगे हमारे पास 9 होंगी. Then we have to work 2 into each, so we'll have 18, and then 18 reverse single crochet stitches, and then our petal will be done. So all the petals will be of the same pattern. So अब chain 3. Now we have to chain 3 and turn our work. 1 double crochet stitch into the first stitch, because this chain 3 will be counted as our first stitch. So we have 2 in the first stitch. Now 2 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 2 double crochet stitches बनाएंगे. 2 double crochet stitches into the next. 2 next में बनाएंगे, और इसी तरीके से हर एक stitch में 2 double crochet stitches बनाते जाएंगे. So we'll just keep doing 2 double crochet stitches in each of these following stitches until we reach the end, and by the end we'll have 18 double crochet stitches. तो हमारे पास इस पेटल में 18 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी, और हमने अब हर पेटल इसी हिसाब से बनानी है, इसी साइज़ की बनानी है, क्योंकि सेंटर वाली जो है वो छोटी बनानी थी हमने, इसलिए हमने वो कम स्टिचेस के साथ बनाई. बट अब से हम ये वाला पैटर्न हर पेटल के लिए यूज़ करेंगे. सो विल यूज़ दिस पैटर्न फॉर एवरी पेटल नाउ. So I'll just count how many I have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. And 2 more will be made on the chain 2 that we did at the beginning. तो जो chain 2 हमने किया था उसके ऊपर हम 2 और बनाएंगे double crochet stitches. So here we have a total of 18 double crochet stitches. Now before starting with the single crochet stitches, we will slip stitch. We'll skip 1, 2, 3, 4, 5, 6 stitches here, and we'll go into the 7th one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we'll go into the 7th one, and we'll slip stitch. 7th one में हम slip stitch कर लेंगे. Chain 1, reverse single crochet stitch in all of these 19 stitches.
I'm sorry, 18 stitches, not 19. 18 stitches. So we'll work 18 single crochet stitches, रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और फिर दूसरे एंड को भी स्लिप स्टिच से पेटल को अटैच कर देंगे. So after finishing the single crochet stitches, we'll slip stitch and attach it to the bottom. So after completing the single crochet stitches, I'm going to slip stitch, and if you don't want to count the stitches before doing the slip stitch, you can just place the petal and see whether it's looking good or not, and you can just attach it to the stitch over there, because there's no hard and fast rule that you have to skip so many stitches only and you have to attach, because when the final result comes out, you won't even notice that whether you skipped one extra stitch or you didn't do that. It won't even show. So you can just place the petal and you can see if it is looking fine, and you can just slip stitch there. तो आप इस ऐसे भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं कि जैसे आप मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे पेटल मेरी अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे आप स्लिप स्टिच कर सकते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने स्किप करे हैं 1 2 3 4 5 स्टिचेस को स्किप करे हैं मैंने, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरी पेटल ठीक लगेगी, तो मैं यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करी हूँ. एंड मेक श्योर दैट व्हेन यू स्लिप स्टिच, like we have to work this way first, right to left, and then left to right, and then again left to right. So we have to make sure about that. So now from here we'll start the next petal, chain 2 double crochet stitches into the same stitch, and the chain 2 will be counted as our first double crochet stitch. So we'll have 3 in total, then 3 double crochet stitches into the next stitch, 1 2 and 3 in the next. तो हमने अब 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बना लिए हैं. जो पहले का चेन 2 था वो पहला डबल क्रोशे स्टिच पे काउंट होगा, एंड 2 हमने बनाए हैं पहले वाले स्टिच में, एंड देन वो टोटल 3 हो गए, और 3 नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाए हैं, और 3 डबल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाए हैं. सो इस तरीके से हमारे पास 9 डबल क्रोशे स्टिचेस हो गए. अब हम 2 बनाएंगे हर स्टिच में, तो हमारे पास 18 हो जाएंगे, और फिर 18 रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिच करके ये वाली पेटल भी हमारी रेडी हो जाएगी. और इसी पैटर्न से आपने सारी पेटल्स बनानी है. सो चेन 3 एट द बिगिनिंग, 1 2 3, विच विल बी काउंटेड एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. 1 double crochet stitch into the first stitch, so we have 2 here, then 2 in the next, 2 double crochet stitches into the next, 2 double crochet stitches into the next, 2 double crochet stitches into the next, and so on until you reach the end. So ये मैंने बना ली है डबल क्रोशे स्टिचेस. 19 डबल क्रोशे स्टिचेस है मेरे पास, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट बिफोर डूइंग द सिंगल क्रोशे रिवर्स स्टिच यू हैव टू स्लिप स्टिच टू द बॉटम, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो हमेशा सिंगल क्रोशे स्टिच करने से पहले इसे बॉटम उसी राउंड के बॉटम से पहले स्लिप स्टिच करके अटैच करना है, फिर सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. सो नाउ वी विल अटैच इट टू द स्टिच वेयर दिस पेटल, the bottom of the petal is starting. So we'll just go into the stitch and we'll slip stitch here, chain 1, reverse single crochet stitches, reverse single crochet stitches करेंगे, and then दूसरे साइड पे भी इसे स्लिप स्टिच करके नीचे बॉटम में अटैच कर देंगे. So it's very important to slip stitch before you start the single crochet stitches, otherwise you won't be able to attach the petal and it won't look good. तो ये ध्यान में रखना है आपने कि सिंगल क्रोशे रिवर्स स्टिच करने से पहले आप अपने पेटल को स्लिप स्टिच करके बॉटम में अटैच कर दीजिए, फिर ये वाला सिंगल क्रोशे स्टिचेस वाला रो करके फिर दूसरे साइड से भी इसे स्लिप स्टिच से हम अटैच कर सकते हैं. ये ऐसे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप इसको बनाना शुरू करोगे ना तो बहुत इजी है. मतलब इतना इजी है, बैठे बैठे बन जाता है और इतना खूबसूरत लगता है. सो वंस यू स्टार्ट मेकिंग यू विल गेट द हैंग ऑफ इट एंड इट्स रियली इजी. सो
Now we'll slip stitch here. So we'll just place the petal and we can see where it's looking good, and we can just attach it there. Now chain 2 and 2 more double crochet stitches into the same stitch as we are starting our another petal. फिर से एक और petal बना रहे हैं हम. 3 double crochet stitches. I like to fold it. मेरे को ऐसे fold करके easy लगता है. 3 double crochet stitches into the next stitch. 1, 2 and 3, and 3 double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में भी 3 double crochet stitches बनाएंगे. One, 2, 3. Now chain 3. 1, 2, 3. Turn your work. 1 double crochet stitch into the very first stitch. 2 double crochet stitches into the next. 2 into the next. And so on until you reach the end of your row. तो इसी तरीके से 2 डबल क्रोशा स्टिचेस करते जाना है जब तक आप एंड पे नहीं पहुंचते, जब तक आपके पास 18 डबल क्रोशा स्टिचेस नहीं होती. तो यहाँ पे मैंने 18 डबल क्रोशा स्टिचेस बना लिए हैं. और नाउ द पेटल ओवर हियर, द प्रीवियस पेटल, यू कैन सी द स्टिच वेयर इट इज स्टार्टिंग, विल जस्ट गो इन एंड विल स्लिप स्टिच इन द सेम स्टिच. तो ये सेम स्टिच पे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे. And then chain 1 and start doing your reverse single crochet stitches. इसी तरीके से रिवर्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे और इसी पैटर्न से आपने बाकी राउंड्स भी कंप्लीट करने हैं ऐसे ही पेटल्स बना के. सो मैं आपको बता दूंगी अभी कि कैसे कितनी पेटल्स आपने हर एक राउंड में बनानी है. बहुत ही ईजी है. अभी मैं ये वाला पेटल ख़त्म करके फिर आपको दिखाती हूँ. So I'll complete this petal and then I'll show you that I'll tell you how many petals you have to make in each round, and you have to repeat the same pattern of the petal for every round until you reach the end of your project, whatever you're making. Depends on that. And this is the last in the chain 3. And now we'll slip stitch here in the stitch where the petal is starting here at the bottom. Just go in, slip stitch, and then so you can see this portion is already done. So now I'll chain 1 and fasten off, because this round is done. After every round you have to fasten off and then attach the yarn to the next round. So we'll just pull it back. पीछे से यहाँ से ऊपर से हम इसे पीछे की तरफ ले लेंगे. तो ये देखिए. सो पहला जो राउंड होगा उसमें आपकी 2 पेटल्स बननी चाहिए. सो फर्स्ट राउंड यू मस्ट हैव 2 पेटल्स. इन द सेकेंड राउंड यू विल हैव 3 पेटल्स एंड इट इंक्रीजेज as your round increases. So in the next round you must have 4 petals, then 5, then 6, 7 and so on. So हर राउंड में एक एक पेटल आपकी इंक्रीज होती जाएगी. सो पहले राउंड में आपके पास 2 पेटल्स होंगी, फिर नेक्स्ट राउंड में आपके पास 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे आपकी पेटल्स इंक्रीज होती जाएंगी. तो आपने हर बार राउंड एंड होने के बाद फासन ऑफ कर लेना है और नेक्स्ट राउंड में जहाँ पे आपने लास्ट पेटल फिनिश करी है उसी के सीध में आपने यार्न अटैच करके अपना नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करनी है. सो वेन एवर यू फिनिश योर राउंड यू हैव टू फासन ऑफ एंड देन यू हैव टू अटैच द यार्न at the next round just above the last petal where you finished your last petal, just above that, so that it gives a really nice finishing like a rose. I'll show you. See, this is what I'm working on. See, this is not yet completed.
See, I'm on the petal here on the 1 2 3 4 on the 5th round. ये देखिए मैं 5th round पे हूँ यहाँ पे. ये देखिए, ये अभी हमने 2 rounds कंप्लीट करे हैं. ये मैंने इसमें ये अब मैं 5th round पे हूँ. So the number of petals increases 2 3 4 5 6 and so on, like that. And this is how you have to complete. And when it is done, this is how it will look. एक बार ये बन जाएगा तो ये ऐसे लगेगा. तो इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो. ऐसे 2 बना के इससे अगर आप अटैच करोगे तो आप बैग बना सकते हो. ऐसा सिर्फ एक शो पीस के जैसे बना सकते हो. या just a small flower, if you want to make a small flower, you can make a small flower like this. It's totally depends on you, whatever you like to make. So you can make a bag out of it. You can make 2 pieces and then you can attach them together and make it like a bag. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep sharing, keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.